यहाँ पे मैंने सीमेंट का घोल बना के बिस्किट के जो नीचे का रेपर आता है प्लास्टिक का, उसमें मैंने डाल दिया है और प्लास्टिक को पहले मैंने तेल लगा दिया है जिससे वो जल्दी से अनमोल्ड हो जाए। और फ़ोटो के टावर को बनाने के लिए मैंने तार लिया है, उसको नीचे से राउंड शेप दे दिया है और बाद में सीमेंट में लगा दिया है। और पोट बनाने के लिए मैंने दवाई के ऊपर जो हमें ढक्कन मिलता है उसका यूज़ किया है और उसको भी मैंने तेल लगा दिया है और पेन को मैंने सेलो टेप लगा दिया है जिससे वो जल्दी से निकल जाए। यहाँ पे मैंने पत्तियाँ बनाने के लिए ग्लॉसी पेपर का यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी थिक पेपर का यूज़ कर सकते हो। ग्लू ड्राई हो जाने के बाद आप उसे पत्तियों के शेप में काट लीजिएगा। पहले मैंने ढक्कन के ऊपर स्पंज लगा दिया है और स्पंज के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाकर चाय की पत्ती चिपका दी है जिससे वो मिट्टी जैसा दिखे। यहाँ पे मैंने फ़ोटो टावर बनाने के लिए अल्फ़ाबेट स्टिकर्स और फ़ोटो ली है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।